Hi guys, Assalamualaikum. मेरा नाम Noreen Gulwani है and you're watching me on Something Hot. We talked about film, theatre and TV, so keep watching. Assalamu alaikum, this is Amna, you're watching Something Hot, and this is Hot Talk. My guest today is somebody who's a personal favorite. She's on television these days, and we've been watching her for the last, I think, year or two. I think personally, she's one of the most promising upcoming newcomers on television these days. उनके characters सारे बहुत well fleshed out, very impressive, positive image, सब कुछ. Of course, आप देख चुके हैं promo में भी. I've got with me Noreen Gulwani. Noreen, welcome to Something Hot. Thank you. And I meant every word I said because I've actually been a fan since Bakhtawar. Thank you so much. It means a lot. Praise doesn't come so easy, so yeah. No, but the thing is that you, of course, as we talk, हमें ऐसा ऐसा अंदाजा होगा कि are you choosing roles that are so good and positive या आपके पास आ ही ऐसे रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता because बहुत से roles हैं. मगर I want to go back and start from the beginning. Okay. आपने journalism पढ़ी, you're somebody who wanted to write. तो ये journalism और writing से acting तक आप कैसे पहुंची? Probably because I wanted something that was ज़्यादा involved, you know, as a person, as a human being. हाँ. Writing is great. It's a very intellectually involving pursuit. लेकिन उसके लिए you need a lot of like पढ़ंत as well, like पढ़ाई होनी चाहिए आपका एक, you know, एक वो होना चाहिए. Knowledge base ज़्यादा होनी चाहिए. So I would definitely write, maybe sometime later. I think maybe once I'm like old. हाँ. तब मैं लिख लूँगी. हाँ. Post retirement plan है writing का. Yeah, I think फिर वो उस वक्त जो है वो आपको एक आपका पर्सपेक्टिव भी सोसाइटी का डिफरेंट होता है एंड आपके पास जो है वो बहुत सारी एक you know सालों की विजडम होती है. तो वो एंड ऑल्सो अभी बिजी विद एक्टिंग एज वेल. तो एक्टिंग इसलिए मुझे लगा अच्छा क्योंकि इट वाज वेरी एंगेजिंग मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, intellectually as well. Like there is a lot more to do with it. Interesting. Spiritually. Yeah, definitely. Because when I think of a character, तो मैं सोचती हूँ ना कि अंदर से कैसे हैं, how's their heart, how's their psyche, how and why they behave and like talk a certain way. So अपने दिमाग में मैं वो सब कुछ सोचती हूँ. So आप पूरा उसका आर्क बनाते हो, पूरा उसका. But you study journalism. Yeah. और आप you went to Malaysia. Yeah. वैसे you're settled in Karachi. Yeah. तो how did you end up in Malaysia? I was studying here पहले for my undergrad and I was studying social sciences. It had like political studies, sociology, gender studies. Okay. So I became a bit of a rebellious kid and I had a lot of like questions and like, you know, issues with the societal norms and beliefs that we engage in. तो वो मैं थोड़ा सा वो सवाल जवाब वाले मोड में चल रही थी. So they didn't like it, like my family. They were like ये ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा कुछ और पढ़ने चले जाओ. हाँ. लेकिन यार ये बड़े मजे की बात है कि उन्होंने सोचा ज़्यादा हो गया. ये नहीं कहा कि कॉलेज से निकाल के घर बिठा के शादी करो. उन्होंने कहा यहाँ से निकाल के बाहर भेज दो. ये सोचा था. हाँ. ये भी सोचा था उन्होंने. लेकिन my mom was like नहीं, ये नहीं. My mom took a stand उस वक्त के नहीं. पढ़ना तो है, she needs to. And if not this, and if she's becoming like a too much of a rebel or a critical thinker, तो फिर सही है कुछ और कर लेगी. तो कुछ और कर लिया जिससे और भी ज्यादा हो गया सब कुछ, कम कुछ नहीं. मैं वही सोच रही हूँ कि बाहर एक लड़की अकेली जाए पढ़ने तो वो मतलब है कि धीमी होके तो नहीं वापस आएगी. और फिर आप एक्सपोज हो जाते हैं पूरा होल न्यू वर्ल्ड से. जहाँ पे प्रोग्रेस बहुत ज्यादा है यहाँ से वैसे. तो मतलब आप क्या ही सोच रहे हैं. क्या आप सोच रहे थे? अब तो मतलब इंतहा हो गई है रिबेलियन और एम्पावरमेंट की. अच्छी बात है, अच्छी बात है. खैर आप वो पढ़ के वापस आई. And then you worked here for a while? I worked here in a couple of different fields. तो इवेंट मैनेजमेंट, थोड़ा सा मॉडलिंग भी, एडवर्टाइजिंग भी, लेकिन वो मज़ा नहीं आया. फिर आई वेंट बैक एंड आई वर्कड इन द आईटी इंडस्ट्री. ओके. इन शोटेक की कंपनी थी. इट वाज अ जर्मन कंपनी.
really like cutting edge वाला scene था. I was managing their website content and their social media content. मजा आया उसमें. I stuck out for like a year and a half. उसके बाद मुझसे नहीं हुआ. उसके बाद I wanted like, because I always had arts with me. A levels में I also took it. तो वो एक side भी है. And then I was very like, with acting also I try this कि कुछ socially responsible चीजें हों. So like I was also socially interested. I wanted to work in social welfare. If not journalism नहीं होता तो फिर मैं वो ही करती. तो I wanted to एक तो come back and I wanted to do something creative. Right. So that's how I came towards acting. मुझे interest develop हुआ था. I saw this character on TV. Not sure what drama it was, but it was this strong-headed girl who wanted to make it work in the world. And she had a lot of hurdles. Similar background as well, middle class-ish. So I could relate to it. I was like, मुझे ये करना है. ये करना है. हम बात कर रहे थे, maybe it was जिंदगी गुलजार है. Yeah, maybe. I think it was for me like a later watch for it, because this was around 2016-ish. और 2017 जिंदगी गुलजार उससे पहले आया था, मगर आपने देखा शायद उस वक्त. हाँ, मैंने ऑनलाइन YouTube पे ही देखा. I was in my office. I remember watching it on my desk. And then थोड़ी दिनों तक मैंने वो process किया. And then one day I was just like, I can't do this. I need to go back. I ran out to the balcony and I was like, okay, what do I do? How do I do it? Because so obviously working in a foreign country, you get a work permit and you have to stick it out. If it's like, because they pay a lot of money to process that work permit for you. साल review होता है. तो वो आधा साल हुआ था. It was July. But and then they were so nice because they were like कि नहीं आप जाएं, आप पाकिस्तान से remotely काम कीजिएगा. Try out this stint with acting. अगर नहीं किया तो वापस आ जाएगा. हम यही how nice. तो फिर मैं चली गई, आ गई. और वापस नहीं गई. December में I finished my year. They even let me keep the laptop. It was a super cool like yoga laptop. या अल्लाह ऐसे सबको दे employees. बाहर वाले यार. I mean tech industry is already like a very booming. Absolutely. उनके लिए it's nothing. It's nothing. So that was but a good experience, but very. Made you restless and वो आपकी एक satisfaction नहीं हो रही थी. Gratification नहीं हो रही थी. Creative. Fulfillment नहीं थी. तो वापस आए and then your Bakhtawar was your first play, right? But you came back and you went to Napa. Yeah. I went to Napa. I did their 3-year theatre course. Why did you think it was important to go to Napa? Well, for me, उस वक्त तो सिर्फ ये था that I just didn't know how to start. ठीक है. I didn't know anything. I think I wasn't very like stage comfortable as well. Like I'm not very extroverted or like animated as a person. अब I'm थोड़ा और भी खुल गए because in the field and. although fidgety हो. थोड़ी सी. खुद ही कहा है, मैंने नहीं कहा. You said. I can't sit in one posture for too long. वैसा वाला. So I was like, I don't know how to do it and I didn't have that self confidence as well कि बस मैं ऐसे ही कुछ शुरू कर दूँ. कुछ पता ही नहीं था. So I was like, let's start with this. They'll teach me some things as well. And फिर देखते हैं, एक journey शुरू होती है तो कुछ ना कुछ हो जाता है. Good. I think it was a good decision. Yeah, it turned out pretty well. What does one learn at Napa? मतलब काफी लोग Napa से आते हैं और उनमें एक certain level of polish होती है as an actor. तो वो क्या मतलब what exactly do they bring out the actor in you? Is it a skill that can be taught? What do you learn at Napa? You learn a lot. Like so basically to do different characters and to come off as like actual different peoples. Like people can believe कि हाँ ये एक अलग character है और ये एक अलग character है. And it's not this actor just doing personality acting. They are actually morphing into some different. It can still have some semblance of you. लेकिन आप एक अलग कैरेक्टर दिखें. थोड़ा सा बोल डिफरेंट रहे, थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है, इमोशंस डिफरेंट है. तो उसके लिए आपको अपने आप से बाहर निकलना पड़ता है ना. आपकी पैटर्न से बाहर निकलना पड़ता है. जिस तरह आप बोलते हैं, आप सोचते हैं, चलते हैं, सब कुछ उसको चेंज करना पड़ता है. दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू. मुश्किल काम है. दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू. तो वो आप जो है वो ट्रेनिंग से वो टूटता है. पहले आपको जो आपके जैसे मैं जिस तरह से बोलती थी, इट वाज़न्ट वेरी साफ उर्दू एंड इट हैड इट्स ओन रिदम. एक होता है ना किसी का, जैसे हर एथनिसिटी का अपना एक रिदम है. एक्सेंट भी नहीं, सिर्फ रिदम. वो भी एक था. तो उसको आप क्लीन करना पड़ता है. पहले आप न्यूट्रल करते हैं अपने आप को, इमोशनली भी, स्पीच में भी, हर चीज में. फिर उसके बाद आप सीखते हैं कि अलग अलग कैरेक्टर्स के अलग अलग स्टाइल्स कैसे बनाने हैं और उनको किस तरह से बिलीवेबल भी करना है. तो वो सब एक डेफिनेटली. And you had some very good professors, I believe.
नापा में, तो क्या किनके साथ मजा आता था काम करने का? सबके साथ. सबके साथ. If I didn't have to work, I would just keep doing this course, this degree, or just theater like again and again. करते रहो. इतना मजा आता है. मजा आता था. And you did do theater, right? हाँ, theater आपने किया. जी, अभी recently I did with Zia Saab. A lot of people from Karachi actually showed up, and it was Romeo and Juliet. So obviously people know the story, they resonate. So it was very nice, very very nice. It was just a few months before his passing as well. It was a great opportunity. तो theater क्यों नहीं चल रहा हमारे मुल्क में? I think उसको sustainable बनाया नहीं गया है, और थोड़ा मुश्किल भी है बनाना, और इतने लोग भी नहीं हैं जो कि उस तरह से करें, जो एक प्रॉपर थिएटर होता है, जो इट्स रियलिज्म, या फिर समथिंग दैट्स नॉट जस्ट स्किट और लाइक स्केच टाइप, कॉमेडी स्केच वाला नहीं, एक प्रॉपर विद बिग प्ले राइट्स का काम हो, या इवन मॉडर्न प्लेज हो, इवन लोकल राइटर्स के भी हों. इतने लोग नहीं है उसमें, फिर वो सस्टेनेबल इतना नहीं हुआ है, और अवेयरनेस भी नहीं है कि आए लोग, उसकी मार्केटिंग वगैरह सब कुछ अगर बने तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है. और आजकल जो बिक रहा है सबसे ज्यादा तो सनसनी बिकती है. तो आई थिंक थिएटर में तो कोई ऐसी सनसनी नहीं होती. सनसनी वाले थिएटर चलते हैं सबसे ज्यादा. सबसे ज्यादा वही चलते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. अनफॉर्चुनेटली जो एक रियल चीज़ के बारे में है, मेंटल हेल्थ हो गया, या कोई सोशल इश्यूज हो गए, क्लाइमेट इश्यूज हो गए, वो अगर वो भी उनको अच्छे से मार्केट करे. चलें शेक्सपियर को ले लिया, हमारा चला था, बट इट वाज वेल मार्केटेड, एंड देन इट वाज ज़िया मौजूदीन. दैट इज आल्सो समथिंग ना, एवरीबॉडी नोज हिम, ऑफ कोर्स. सो दे वर लाइक क्यूरियस कि अब नेक्स्ट क्या है, एंड देन नोबडी कुड डू शेक्सपियर यहाँ पे तो वैसे भी, तो वो उनकी एक अपनी फिर नॉवेल्टी भी है. बट थिएटर इज अ, इट डिजर्व्स टू वर्क. It should work because it really, like, for the viewer it is something like आप वो experience कहीं नहीं कर सकते कि एक actor आपके सामने live एक story, एक plot लेके आपको एक पूरा एक जिंदगी दिखा रहा है. And there are no cuts, there is no room for fumble, there is no, like, you know, you can't blank out, nothing. There are no special effects. There are no special effects, nothing. So it's like you're watching someone live life, but almost perfectly with, you know, technical like beauty and like, you know. Yeah. I know a good theater is irreplaceable actually. That is so true. Or what theater teaches you is how to perform, right? और हमने टीवी पे भी ये देखा है कि जो एक्टर्स थिएटर करके आते हैं टेलीविजन पे, उनमें एक एक्स्ट्रा टैलेंट होता है, बिकॉज थिएटर इज वेरी डिफिकल्ट, बट आपको 360 डिग्री के एंगल ऑडियंस को मिल रहा है, सो यू आर कॉन्शियस ऑफ योर 360 डिग्रीज एंड योर साउंड एंड ऑल ऑफ दैट. वो एडिट रूम में तो कुछ नहीं बदलना, और कैमरा भी फ्लैट 2D कैमरा तो नहीं है. तो जो थिएटर से टेलीविजन पे आते हैं आपको नजर आता है कि यार इनको थोड़ा ज्यादा आता है बाकियों से. So did you feel that way when you came to television, that you were comfortable, it was easier than theater कि नहीं? I knew my work, I knew how to act and do this character, but there were some technical things that I did have to get used to. आवाज थोड़ी सी आपको, you know, धीमी रखनी है क्योंकि आपके साथ ही माइक लगा हुआ है. You don't need to project. Expressions भी you should make it a little subtle, क्योंकि वो स्क्रीन पे subtle अच्छा लगता है. हमारे टेलीविजन पे subtle expressions करने चाहिए ना, अच्छा तो वही लगता है. और अच्छा थिएटर का जो लाउड है ना, वो भी वो जो फ्लैट आउट जो एक बॉक्स एक्टिंग लाउड है, वो वाला अलग लाउड है. इट्स नॉट द सेम थिंग. सो या कैरेक्टर पूरा एनिमेटेड हो, पूरा बना हुआ, उसकी सारी चीजें हो, लेकिन आपका एक्सप्रेशन थोड़ा सा, क्योंकि यूर ऑब्वियसली द कैमरा इज रियली अप क्लोज टू यू एज वेल, and we don't do long takes, and we don't do like master shots itne bade bade for too long, right? We just show it as establishing thing, and then we go into closer. तो closer में आप extra करेंगे, it's not gonna look nice. Film में, which is still camera, but there is bigger space, you know, space. Canvas बड़ा है. तब आप थोड़ा सा कर सकते हैं. There's room to play. Yeah, absolutely. Yeah, animate it a bit. Right. So you did theatre for a couple of years when you were at Napa, है ना? और उसी वक्त you started a little bit of television as well. तो how was the foray? किस तरह, किसने call किया? Did you approach somebody? Did you know people by then? Did somebody at Napa recommend you to the TV channels? No, I did a short film for C Prime. It was called Paying Guest. From there, I got a call for Safar Tamam Hua. Okay. Which was for Hum, and then I also from there
from that short film I got also like some other, you know, small, big, medium roles for couple of things. But because मेरा साथ में चल रहा था course I was studying, so I wanted to continue that, which is why I also like should have done some other nice things which I couldn't do. लेकिन it's okay. फिर वो जब खत्म हुआ then I properly started, तो तब फिर बख्तावर was first. Bakhtawar came to you. Yeah. And your character comes somewhere in the middle of the drama, around है ना, the 8th story. episode or something. 8th episode में आ गया था? I think 8th से आया था. That's not the middle. That's like 1/3 through, है ना? इतने episodes. But उस character में you had impact. I mean, for sure. उस वक्त भी जब हम देख रहे थे तो ऐसा नहीं था कि कोई एक supporting actor है जिसका नाम भी आपको नहीं पता. You had impact. तो obviously you're taking your craft very seriously, Noreen. इसमें तो कोई शक नहीं है. तो उस character में भी आपने डाला. You read the script and everything. You wanted to do this character, or is it like you had no choice? I mean, how I want to know how young actresses are choosing their roles. I did read thoda sa script when I went for the meeting. I was like briefed that it's a grayish negative character, but मैंने उसी वक्त सोचा था, मैंने कहा I'm not gonna do it like that. Really? Yeah, like वो जो चीजें लिखी हैं वो तो रहेंगी, but I wanted to like, you know, add some like soft to it, and then some insecurities, some fragilities, क्योंकि you know it's like a motherless child and all. मुझे honestly speaking ये याद भी नहीं कि motherless थी वो. हाँ, उसके भी there is no mother, right? वो just एक जो मेरे अब्बा हैं, पावरली साहब थे, बस. So वो चीजें मतलब मैंने खुद से वो सोची थी कि ये तो करना जरूरी है, and बस फिर वो हो गया, and then politically जो उसका था, so yeah, there had to be power and all. बस वो वैसे हो गया. Did you enjoy it? I did really enjoy it. I did enjoy it a lot. And मुझे हाँ जब पहले से मुझे एक अच्छी feeling आ गई थी कि इसको मैं कुछ कर सकती हूँ. There is something I can do with. So that's how I choose. It doesn't have to be like a mega project, or it doesn't have to be like very fancy. Right. Even if it's like a simpler character or simpler project, if I feel I can do something interesting with this character, then I do it. Then you did it. And that was your first major role that you played for television? Yeah, first major. First major role. अच्छा, अब ये बड़ी मज़े की बात है कि story बख्तावर की बड़ी different थी. It really stood out when it came out in promos and the curtain raiser and everything. We were like really intrigued. But फिर थोड़ी देर बाद जाके हमारी सब कहानियाँ जो हैं वो शुरू जहाँ से भी हों या उनका premise कुछ भी हो, वो आ जाके फैमिली ड्रामा बन जाती है. और उसमें लड़का लड़की की शादी बहुत ज़रूरी हो जाती है और रोमांस बहुत ज़रूरी हो जाता है. और उसकी वजह obviously यही है कि I don't know, are our writers equipped to write these kind of stories? Probably not. It's easier to write about, you know, ये शादी ब्याह वाली चीज़, I guess. But I can't say for sure. Like maybe it's not just the capability, but also the kind of investment that goes into it, the kind of motivation. Right. Does the production even want it or not? Can they sell it or not? So वो सब कुछ भी आ जाता है कि सेलिब्रिटी है कि नहीं, सेंसेशनलिज्म या फिर जो टॉक्सिक चीजें वो आपको क्या ख्याल है आजकल क्या बिक रहा है? Tough question. टॉक्सिक चीजें बिक रही हैं. नहीं, सही है बात. पूरे मुल्क में, it's not just television, पूरे मुल्क में टॉक्सिक चीजें बिक रही हैं. और थिएटर में और टीवी में बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि प्ले राइट जो है, जो थिएटर के लिए लिख रहा है, मेरे ख्याल है वो for lack of better word वो भोंगा नहीं हो सकता. You know, at the end of the day, you have a play that's written by somebody who knows how to write, whether it's a Shakespeare or even if it's somebody from a contemporary era. Theatre wala banda knows how to write, writer, and same goes for the actor कि जो stage पे आएगा उसको acting तो आती होगी, भी वो सीख लेगा, ये वो उसके पास गुंजाइश नहीं है कि ना आए. वो television unfortunately बहुत सी चीज़ें कवर भी कर देता है और हमारे जो लिखे जा रहे हैं ड्रामे वो बहुत सुपीरियर नहीं हैं. अच्छे भी हैं लेकिन बहुत कम है. बट अगेन नौरीन, हाउ आर यू चूजिंग योर रोल्स कि ये तो मिल गया एक. और ठीक है, हुरिया है ना, हुरिया जो थी वो नेगेटिव ज़रूर थी लेकिन ऐसी नहीं थी कि आउटराइट विलनस हो. तो डिड यू चेंज समथिंग अबाउट हुरिया? आई जस्ट like I think एक्टर का खुद का भी जो पर्सनालिटी होती है वो obviously शाइन थ्रू कर रही होती है. So I just tried to like give her some things, जैसे even if she's doing something, I wanted to give her some,
you know, like she talks to her father about these things. So it's not just her, it's also coming in from, you know, from the generation before. That's what she's been taught. And sometimes when her counterparts, जैसे जो Dilawar जो था, Xavier's character, when he kind of mocks her, so I didn't want to like outright make a negative reaction for it. I would also like make her listen. सुनती भी थी वो, and then she'd just be like, okay, fine, but I mean, this is how politics is. Yeah. This is the only way you get the votes. So, and that works. Yeah. है ना, ये भी है. So then it wasn't like just her. It was like an entire culture that she was a part of. Absolutely, absolutely. And moving on to Pyari Mona, you've got a really cute role there as well. And what I like about Kinza is that Kinza is not insecure by her husband's friend. And Kinza is a bit of a klutz, obviously. Ditsi hai, wo cheezein todti rehti hai. Magar Kinza mean nahi hai, negative nahi hai bilkul bhi. So again, is that the way the character was written? Yeah, Is that a character you enjoy doing? I really did enjoy doing it because it was my first time doing something a little comic. I took it up as a comedy. Like for me, even though the drama was not, for me this was comedy. Comic character is comic, yeah. So I was like, मुझे अब ये chance मिला है जो कि मुझे था करना था. It was one of my things. कि I want to try this out. It came and I was like, okay, I will just do it like this, and I had so much fun doing it because I just didn't have to. There was no toxic energy. There was no blockade. You know, I just had to just, you know, be silly and goofy. And that's fun, right? That's so much fun. हाँ, तो मजा आया वो करके. बहुत मजा आया. Abhi you're on air on two very popular dramas. एक तो Muhabbat Gumshuda Meri, which is trending every week, और दूसरा Jhoom, which is getting a lot of views again. और दोनों में आपके again characters जो हैं वो अच्छे हैं. They're not usually characters supporting में कोई ना कोई negative या toxic vibe या एक बड़ी बोब होती है. But मोहब्बत में you're playing such a nice sister. हम तो हर episode में review में कहते हैं कि we've stopped seeing these kind of sisters, you know, जो कि progressive भी है, मगर उसको प्यार से समझा भी रही है, support भी कर रही है. अभी तक उसने उसको थप्पड़ नहीं मारा और ये नहीं कह रही कि you know जड़ें नहीं काट रही उसकी या you know. And I feel that personally she will have problems in her marriage and she will have to deal with Mr. Daniel's behavior. Yeah? So again, it's not a simple role. No. Yeah, because she's navigating like three entities. Her sister, her parents and like the older generation, and then her married life. And she has to deal with all three of them at the same time. And हाँ, मुझे थोड़ी हैरत भी हो रही है और बहुत खुशी हो रही है and grateful भी feel कर रही हूँ that लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है ये character रुशना का. बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे था कि बस ये एक साइड का कैरेक्टर होगा जो कि थोड़ा इग्नोर्ड रहेगा, लेकिन people are, you know, giving it a lot of praise and love. So what all are you putting into the character other than your skill? Are you putting energy or thought to the character's wardrobe, for example, or look? या वो बन के आती है आपके पास या आप क्रिएट करते हो, क्या है? हमने सेट पे साथ में क्रिएट की थी with the production people, with the director and with me, like it's a simple girl, doesn't really care about like you know fashion, let's say, but simple decent clothes, ठंडे रंग, स्टाइलिश तो है लेकिन हाँ फैशनेबल नहीं है लेकिन स्टाइलिश है. हाँ थोड़ा सा एलिगेंस है. हाँ तो बट हाँ वो था. एंड देन हेयर, सिंस माय हेयर इज लाइक दिस, तो if I get ready ना तो थोड़ा ये ग्लैम रखता है. So we had to like you know straighten them out. हाँ थोड़ा simple सुघड़ look था उसका. What's Daniel's problem? Daniel is a very like quintessential desi guy. ऐसे ही है ना, quintessential desi guy. ऐसे ही हैं guys. This is your reputation, unfortunately. Not all. I have some friends who are most amazing. I feel like people who have not had any exposure ना from the outer world, जो पाकिस्तान से बाहर नहीं गए, उनका तो ये है जरा. वैसे मैं ये नहीं कह रही, I'm not trying to stereotype कि जो बाहर गए वो बड़े नहीं वो भी नहीं होते. हाँ वो भी नहीं होते. वो भी नहीं होते, लेकिन कम से कम एक्सपोजर थोड़ा सा आ जाता है. थोड़ा एक्सपोजर आ जाता है. एटलीस्ट आप खुद ना हो तो आप टॉलरेंट तो हो जाए ना दूसरों के लिए. आप भले जैसे हैं, लेकिन वो भी नहीं है. और फिर So मेरा सवाल ये है कि now going into the psychoanalysis of the couple, रुशना and दानियाल, मुझे देख के ऐसा लगा है कि रुशना जो है obviously navigate कर रही है between दानियाल and her sister, कि इनके बीच में जंग ना हो और ये एक दूसरे से अलग अलग रहें. But she's in love with him.
Are these kind of men, is it possible to fall in love with this kind of man? Yeah, it is possible. If you're not super healed, हाँ. एक कि जो आजकल mental health का काफी I'm so glad कि काफी अच्छा सीन हो गया है. People are very much aware and like exposed to healthy mental health habits. Yeah. And like healing is a really real thing. So I feel like there is definitely a huge chance that you can be in love with or attracted to kind of toxic people at some point. हमारी 22 करोड़ अवाम जो है उसकी. हाँ, रुशना का लेकिन देखें ना अलग सीन है. शी इज नॉट अ वर्किंग वुमन. शी स्टेज एट होम. शी probably like did some kind of like higher education, but not to the level or not to the quality जहाँ पे वो इन चीजों के लिए स्टैंड लेने में कॉन्फिडेंस फील करे अपने आप में. तो वो आगे नहीं बोलती है उसके सामने इतना, जबकि वो अपनी बहन के लिए करती है. लेकिन शी कांट आउटराइट. देयर वाज अ आई डोंट नो, आई डोंट थिंक आई कैन रिवील इट बिकॉज वो प्लॉट की चीज आ जाएगी. लेकिन एक इंस्टेंस था जिसमें दानियाल उसे मिलने भी नहीं देता अपनी बहन से. सो आई वाज लाइक उसका क्या मसला है? सिर्फ ये उसका घर तो नहीं है, दोनों भाइयों का अब्बा जो है वो दोनों का घर है ना. तो खाली वो क्यों कर रहा है? तो बट दिस कैरेक्टर डजंट, बिकॉज right now he is the man of the He's house. the man, beta hai wo, you know, he's the only boy in that house. But काफी टॉक्सिक है, लेकिन अच्छी क्वालिटीज भी उसकी हैं. मतलब है कि प्यार भी करता है रुशना से in his own warped way. ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करता. Yeah, so he's not a bad guy. He's not a bad guy. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि what is a bad guy for the normal person. What is a bad guy? कि अच्छा you know मॉरली तो गलत नहीं है शायद, लेकिन टिपिकली ब्लैक होगा. ब्लैक जिसकी इंटेंशंस ही बुरी हैं. बिल्कुल. दानियाल की इंटेंशंस बुरी नहीं है. हाँ. उसका बस फ्रेमवर्क ये है कि अब इज्जत भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिससे मैं खुद काफी लड़ती हूँ. हाँ. सिर्फ क्या मर्द की इज्जत और गैरत होती है, औरत की नहीं होती? क्या मर्द को औरत की इज्जत रखने का दिया जाता है यहाँ पे ट्रेनिंग? क्या वो रखता है औरत की गैरत का ख्याल? वो उसका जिम्मेदारी उसको दी जाती है ये कि भाई आप हैं पुलिस वाले, आपने इज्जत. मतलब what about a woman's गैरत in her husband, in her boyfriend, in her father, in her brothers? When they go out and behave in society, do they also think कि हमें अपने घर की औरतों की इज्जत का ख्याल रखना है before doing something or acting a certain way? वो तो नहीं करते. नहीं. तो औरत ही सिर्फ उसका मन रखे, उसकी इज्जत का ख्याल रखे, उसकी गैरत अपहोल्ड करे. ये तो नॉट फेयर है ना. नहीं, तो सोसाइटी में तो फेयर नहीं है. इसीलिए इक्वालिटी नहीं है. इसीलिए हम कहते हैं कि फेमिनिज्म को समझना चाहिए, बिकॉज नहीं है. जो चीज़ अवेलेबल नहीं है. बट इंटरेस्टिंग डिस्कशन. और ड्रामा में अनफॉर्चुनेटली इसको बहुत पुअरली हैंडल किया जाता है, बिकॉज जितना आपका टॉक्सिक हीरो होगा, पीपल आर इन लव विद हिम. द वर्स ही इज, द मोर पीपल एंजॉय हिम. There are some great things about masculinity which we should celebrate. Bravery, leadership, protection. वो चीज़ें I think उसकी वजह से वो हीरो में क्योंकि हमारे होती हैं, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं. थोड़ा सा जो है वो possessiveness और कुछ ऐसे traits हैं जो अगर क्रॉस कर जाएं एक बाउंड्री तो फिर वो अनफेयर हो जाते हैं. तो वो उसको ज़रा कंट्रोल करना चाहिए. सही बात है. मेरे ख्याल है आपने जितनी क्वालिटीज़ बताई फॉर अ हीरो, bravery, leadership qualities, ये सब are how he behaves in society at large. But when it comes to his relationship with the love of his life or with the women in his life, that changes, and people don't care. Because people are also conditioned. People are conditioned. We also like associate a woman's identity with men. Absolutely. उनकी अपनी कोई dreams या aspirations हो या अपनी सोच हो तो वो acceptable इतना नहीं है. जैसे रुशना की नहीं है. मुझे नहीं पता रुशना खुद क्या चाहती है जिंदगी से. वो अपने आप से तो सोचती है. हाँ. वो उसके अपना एक है कि नहीं यार ये ज्यादा है, ये ऐसे नहीं, इतना वायलेंट नहीं, बच्ची है, आराम से बात करो. लेकिन वो उस तरह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती बिकॉज पावर नहीं है कैरेक्टर के पास. पावर नहीं दिया हुआ. पावर नहीं है. एब्सोल्युटली. और फिर ऑफ कोर्स फाइनली झूम में मेरे ख्याल है कि बड़ा अच्छा हैंडल कर रहे हैं वो, with the whole anger issue and the mental health and the relationship between a slightly older girl and you know and you are the very sweet Dr. Malav. Yeah, Malav was like, Malav is fun and she's supportive, sweet, and like she वो मुझे बड़ा funny लगा था. So I was like kind of struggling also that how do I make
this fact that she's, you know, she's been single for a while and she's looking for like a partner. How do I make it sweet and not cringy? Cringy, हाँ. वो एक था ना एक scene ऐसा. कहते मैं भी तो हूँ. हाँ. मुझे भी कोई मिल जाए. And then इसमें, you know, हमारे हॉस्पिटल में कोई इंटरेस्टिंग लोग, अच्छे हैंडसम लोग नहीं हैं. हाँ. और ये बड़ी रियल कॉन्वर्सेशन है, because I think लड़कियां ऐसे बात करती हैं, है ना? But Noreen, do you fear now that you're going to be zoned as a supporting actor, or do you hope that you'll make it to the lead cast? What are you hoping career-wise? I hope, and people do encourage me that way as well. Maybe I also have a little bit of a role in not, because I had been offered something like this in the past, like a lead character. It was a negative lead, and I wasn't super comfortable playing it. You weren't? No. Okay. So I didn't take it on. Okay. Although I didn't have the privilege to say no to something like that. But I was like, I'd rather... But isn't it an actor's job to do a certain role? Negative bhi ho to, why? I felt like negative to Bakhtawar was also. But I felt like that was crossing something that I would call, like, my conscience was not settling well with it. तो वो मैंने नहीं किया. तो आई थिंक अगर आप एक करते हैं लीड, फिर आपको लोग उसमें देखते हैं, फिर आपको वो इमेजिन कर सकते हैं और इस तरह के, फिर वो आपको देते हैं. अगर आप नहीं करेंगे तो शायद, सो मे बी इट्स मी, बट आई थिंक अभी आई विल डू लीड. You're in talks? In talks, yeah, like talks हो गई हैं. They're like, yeah, we'll shoot soon. I'm glad. I would love to see you in the lead, because although you're great in all the characters that you take up, I think there's a lot more potential there that shouldn't go untapped, for sure. And you're also doing your feature film. Yeah. And camera to close ho gaya usse dekhe. Shot 2 films. 2 films. Ek to one is Nayab with Yumna. Yeah. And the other one is Shoaib Saab's movie. Oh yes, Aasman Bolay, of course. Wow, how exciting are those two now? Very. Ek to आनी थी, दोनों इसी साल आ रही हैं, है ना? लेकिन अब मेरा ख्याल है कि next year के first quarter में चली गई हैं. दोनों? मेरा ख्याल है दोनों ही. शूट तो कंप्लीट हो गया है ना दोनों का? शूट कंप्लीट हो गया है. In edit. So tell me about your role in both of them. शोएब साहब वाली फिल्म में तो I'm playing a journalist. How lucky are you to have worked with Shoaib Saab? Very. And as a journalist. Very. Zia Saab, then Shoaib Saab. Like, what more could I ask for? Theatre and film थे दोनों के best. अगर आप कहें. Very, and it was a nice character. Very like brave character, fun character, strong character, empowered, witty, intellectual, great character. Dream character. Yeah. Dream character. Nice. And what about Nayab? Nayab, on the cricket team? No. I'm from the family of Nayab. So it's a sports struggle story, right? So we're also obviously delving into their socio-economic conditions, family life and all. So usme it's a character. And I think my character drives, it's not a negative character, but it's driving the major conflict in their family. Okay, interesting. Yeah. Interesting. So now you've done theatre and you're doing television and you're about to do film. Which medium would you choose for yourself? I think I would not be able to like choose one, because I'd get so bored doing one. So I want to keep like all of these rotating around. Between all of them. Yeah. And why not? Yeah. And why not? Yeah, absolutely. Yeah. I won't ask you who you enjoyed working with or who your favorites are in the industry, whatever. I do want to ask you, how easy or difficult is it for women to work in the entertainment industry today? For newcomers to work, how easy is it or difficult? To get work or to be working? To be in the job, in the work. Like working conditions, you everything. mean? Everything. I mean, I'm talking about perception of actresses or working conditions or pay problems, payments. Can you support payments yourself? are super delayed. Super delayed. Yeah, super delayed. तो इनका क्या ख्याल होता है प्रोडक्शन हाउसेस का कि जो एक्टर्स हैं वो बिल्स कैसे देंगे? पता नहीं क्या उनका ख्याल होता है. आप ये भी बोल दो ना कि I'm like the main breadwinner and I need to like Nothing. कुछ नहीं होता. But they give and they don't mess it up or anything. For me though they haven't. And
The pay is like obviously आप start तो एक certain like minimal से ही करते हैं जो benchmark है, and then you work around and you have to negotiate, and that is also complicated because like how do you negotiate, and then how do you decide कि cut off point क्या है? Cut off point क्या है, and then obviously they don't want to like let you get beyond a certain goal, and then you want to grow yearly or like however project wise जो भी आप उसको करें, तो थोड़ा सा वो है, लेकिन आप with time सीख लेते हैं. कोई आपको अच्छे एक्टर्स मिलते हैं आसपास तो वो कभी आपको encourage भी कर देते हैं कि नहीं this is how you deserve, इतना आपको करना चाहिए. I always, मैं तो अगर मेरे साथ कोई हो जो मुझसे नया होता है, so if they ask me or if they want, मैं कहती हूँ नहीं यार आप अभी next में ये कर सकते हो, and मुझे भी ऐसे लोग मिले हैं. So who have been the supporting people in your small journey till now? Specifically कोई ऐसा नहीं, बस छोटा मोटा बातों में जैसे one actress was like no you deserve this, and she's a name in herself, but she was kind enough, so it's like smaller interactions that give you little like glimmers of idea. And is there any kind of aggression, antagonism ever on set between actors, between leads and newcomers, or शायद होता है हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कभी, but not so. There was definitely a time when someone was like really distracting, like they would try to distract me in one of the beginning projects, but didn't really. You managed. Yeah, I didn't. You managed. हाँ, I managed. सही है. Performance effect फिर भी नहीं हुई, but like फिर आपको बुरा ये लगता है कि यार आप क्यों करना चाह रहे हो, मतलब क्या है आपका मसला, आप एक्चुअली कहीं और हो, अभी तो हमने स्टार्ट किया था, क्या है यार, why give this bitter feeling in on my tongue, कि अब मुझे फिर अजीब, because it's fun when you know everybody well and everybody is super nice, like most of my sets everybody's been friends, co-actors भी, directors भी, तो तभी तो मजा आता है काम absolutely करने का. absolutely जब सब energy team अच्छी एक होनी दूसरे के चाहिए. साथ एनर्जी अच्छी है, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं खेलने के लिए ना, आप अच्छी एनर्जी दोगे तो वो सामने वाला एक्शन रिएक्शन पे देगा, बिल्कुल मजा तो उसमें आएगा. So Noreen, you're also stepping into a new project right now. Can we talk about that? I don't know. And a new drama? Yeah. Okay, for television. Yeah. And serial? Serial है? Serial है. Okay. बस और क्या बताऊँ? I don't know. कैरेक्टर के बारे में बता दो बगैर कुछ और बताए. It's a negative lead. Okay. Yeah. Okay. But it's an interesting character. I have read more than a couple of episodes. तो शुरू में मुझे था कि यार typical लग रहा है, but then I have found things that I can play with. Okay. And negative is a lot of fun to do. Yeah. मजा आता है इसमें बहुत. तो I think I'll have fun. Juliet करने में नहीं मजा आया था? उसमें तो बहुत मजा आया था. And we were supposed to do a rerun. So we did this last year, and then we were supposed to do a rerun this year around like March, and we were also supposed to go on a tour, Islamabad, Lahore as well. But वो नहीं हो पाया. But I was so excited because बहुत मजा आया. Are you a romantic at heart? But I try to like, because that's not how you should make decisions. That's true. Juliet का अशर क्या हुआ था हमने देख लिया था. But हाँ ये है कि वो तो बच्चे थे, चलो बड़े होके तो आप True. So इस ड्रामे की और क्या? Looking forward to seeing you in a negative lead. It will be a lead character. तो अच्छी बात है. So आहिस्ता slowly and steady काम आगे बढ़ रहा है. हाँ, नेगेटिव लीड तो पहले भी एक था जब मैं आपको बता रही थी. बट वो मुझे जरा एक्सेप्टेबल नहीं लगा था. ये लिमिट नहीं क्रॉस कर रहा. अभी तक तो नहीं क्रॉस किया. 10 एपिसोड्स तो पढ़ लिए हैं, तो नहीं किए हैं. अल्लाह ना करे. फिर क्या करूँगी. देखें. पॉलिटिक्स चलती है टेलीविजन पे. फॉर एग्जांपल ये डर होता है एक्टर्स को, खासतौर पर न्यूकमर्स को, खासतौर पर सपोर्टिंग एक्टर्स को, कि यार अगर हम ना करेंगे या कहेंगे कि इसको बदल दो तो आइंदा हमें कास्ट नहीं किया जाएगा. एंड विक्टिमाइजेशन होती है. बदलने का तो मैंने कभी नहीं कहा. अच्छा. क्योंकि मैं पहले से सारा कुछ सोच लेती हूँ कि यार ये ऐसे है तो फिर अब इसको करना है. तो या तो कोई अच्छा जुबान में कुछ ज़्यादा हुआ तो वो ठीक कर लेते हैं. बट यूजुअली मैंने बदलने का नहीं कहा है, क्योंकि फिर मेरा ये होता है कि अगर ये लिखा हुआ है तो एज एन एक्टर मुझे उसको करके भी दिखाना है, और एक्सेप्टेबिलिटी और बिलीवेबिलिटी की लाइन के अंदर रह के करके दिखाना है. तो वो फिर मैं एज अ चैलेंज
ले लेती हूँ। लेकिन अगर हाँ मुझे लगता है थोड़ा सा होता है, अगर आप बहुत बार मनाही करते रहेंगे तो फिर मुझे लगता है कि दे आल्सो लूज। हाँ आपके कितना पेशेंस कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये है, बट थोड़ा बहुत अगर आप करते हैं तो, बट आई डोंट थिंक आई एम एट दिस लेवल कि मुझे इतना अंदर का पता हो कि यू नो, बिकॉज आई थिंक सम पीपल कैन नॉट, इफ दे आर अलाइंड विद अ सर्टेन ग्रुप देन दे probably had a harder time saying no. Right. So ये था आपका psychotherapy session, Noreen. इसके बाद मैंने नतीजा निकाला है that you're a very content person and you're सोच समझ के decisions अपने करते हो, but you're happy with the choices you're making, and उसकी वजह से I think you're generating good energy and you're getting good projects. This is my analysis. Hopefully it's true. Hopefully it's true. Fingers crossed. Yeah. But I'm so glad that I caught you between two different shoots, you know, because I know that you guys have such crazy schedules. मैं तो सुनती हूँ एक्टर्स का, मैं कहती हूँ वाह कैसे करते हो 12-12 घंटे काम. मेरी दुनिया में ऐसा किसी की रूटीन नहीं होती होगी जितनी यहाँ पे होती है. वो भी है ना, it's tough working conditions. और जब काम हो रहा होता है पूरे 12 घंटे तब तो फिर भी अच्छा है. हाँ. जब आप वेट करते हैं ना उसके बीच में, हाँ. तब वो बहुत वेट्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं. फिर आई हैव लाइक माई लैपटॉप, माई बुक, earphones, but बैठ के भी तो आप थक जाते हैं. You need to like move around. And you have other things to do in life as well. Yeah, वो तो खैर आपने अगर टाइम दिया हुआ है तो आपने दिया हुआ, आपने डेट दी हुई है. हाँ. But yeah, obviously लेकिन आपको वो frustration तो फील होती है ना कि अगर मैं यहाँ कुछ ही नहीं कर रही हूँ तो मैं वो चीज़ कर लेती. बिल्कुल. But I guess it's part of the deal. क्या करें? Part of the parcel. Anyway, Noreen, thank you so much for your time. आई थिंक हम काफ़ी देर से गपशप मार रहे हैं. मुझे सबसे बड़ा डर यही था कि मैं कोई चीज़ भूल ना जाऊँ. हम भूले तो कुछ नहीं. हाँ, नहीं मेरा नहीं ख्याल. नहीं. I'm also like you. हाँ, you I can see that. I literally don't do things before I need to do them because I will forget. I forget. हाँ, मुझे यही था कि क्या नहीं. I think we've covered all avenues of your career and your rapidly growing career. And I hope that we see you more on television, and looking forward to your drama, looking forward to your movies. And और क्या करने का शौक है? Parting statement क्या है कि क्या ambition और aspiration क्या है कि मैं ये करना चाहती हूँ? In the realm, in the same medium. In the same medium, maybe write. I like to paint as well, but that's a different medium. हाँ, that's a different medium. I love to travel, so I want to have a balanced life also, which is also why I kind of take my work a little slow. No, I'm a slow person. No, I think that's good. I think you've struck the right balance कि वो बहुत ज़रूरी है कि बंदा इतना ना पड़ जाए काम में कि काम जिंदगी बन जाए. Oh, there's a cat. There is. What a pretty cat. Like something is moving. Yes, he just found the door open and walked in. Yes, he's quite a diva. Anyway, Noreen, thank you again. Thank you for your time. Thank you for having me and for asking such meaningful and interesting questions. Well, I hope so. Thought-provoking questions. And you gave thought-provoking answers. I tried. Very deep answers. I tried. And good luck with your future ventures. Thank you. Thank you so much.